अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपका ख्वाजा मोइनुद्दीन। आज हम लोग फिर से हमारे लोकेशन पहुंचे हैं आप लोगों की दुआएं के साथ। आज हम लोग मटन करी विथ रा मैंगो बना रहे हैं। जी हाँ, कच्चा मैंगो के साथ मटन करी कॉम्बिनेशन बहुत ही बढ़िया रहता है, बहुत ही मज़े का रहता है। चलिए नवाब्स किचन के स्टाइल में आसानी से कैसे बनाते हैं देखते हैं। मटन करी कच्चा मैंगो के साथ बहुत ही बढ़िया रहता है। रेसिपी स्टार्ट करेंगे। पहले इसमें हम लोग ऑयल ऐड करेंगे। इसी ऑयल में हम लोग फाइनली चॉप्ड ऑनियंस भी ऐड करेंगे। ऑनियंस के साथ साथ हम लोग इसमें ग्रीन चिल्ली भी ऐड करेंगे। ग्रीन चिल्ली के साथ साथ करी लीव्स भी डालेंगे। इन सारे इंग्रेडिएंट्स के साथ साथ हम लोग एज यूजुअल जिंजर गार्लिक पेस्ट भी ऐड करेंगे। जिंजर गार्लिक पेस्ट का जो स्मेल है वो जाते ही हम लोग इसमें मीट ऐड कर देंगे। मीट को 10 मिनट तक ऑयल में अच्छी तरह पकाए बाद हम लोग इसी में टर्मरिक पाउडर, रेड चिल्ली पाउडर और सॉल्ट भी ऐड करेंगे।
इन सारे इंग्रेडिएंट्स के साथ मीट अच्छी तरह बॉईल हो गया है। 20 मिनट तक पके बाद हम लोग इसमें कोरिएंडर पाउडर और मीट मसाला भी ऐड करेंगे। सारे स्पाइसेस ऐड करे बाद इसी वक्त हम लोग इसमें कच्चा आम भी ऐड करेंगे। मटन का टेस्ट को और भी डबल करने के लिए हम लोग इसमें मिंट लीव्स भी डालेंगे। फाइनली इसमें हम लोग फाइनली चॉप्ड कोरिएंडर भी ऐड करेंगे। मटन ऑलमोस्ट बॉईल हो गया है, उसके साथ साथ रॉ मैंगो भी बॉईल होने के लिए इसको हम लोग 10 से लेके 15 मिनट तक हल्के से आंच पे रखेंगे।
इसी तरह आप लोग हम लोग को सपोर्ट करते रहिए। इंशाअल्लाह हमारे ये जर्नी कंटिन्यू करेंगे। हम लोग को कांटेक्ट करने के लिए 786guardfoods@gmail.com पर मेल करिए, हम लोग आप तक पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो अपलोड होने तक जो भी आसपास आप लोग के घर के पास है मजबूर इंसान, इस लॉकडाउन के टाइम पे उनकी मदद करिए, वही हमारे को बहुत खुशी मिलती है। नेक्स्ट वीडियो अपलोड होने तक हमारे लिए दुआ करिए और सारी दुनिया के लिए दुआ करिए। अल्लाह हाफिज़।